Good morning students, welcome to the class, and this lecture is for class 12th, and today we start our next chapter from organic chemistry, that is alcohol, phenol and ether, and this is the lecture 1. Alcohol, phenols and ethers. And this is the lecture 1. Okay, so first of all, alcohols are OH, phenols are OH at benzene ring, and ethers are R bond O bond R dash. In case of ethers, there is R may equals to R dash or R does not equals to R dash. ठीक है, क्या हुआ कि एल्कोहल को ROH कहते हैं और फिनॉल को बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH लग जाता है उसको फिनॉल बता देते हैं। ईथर्स क्या हो गया, ROR, ये क्या है, R भी एक एल्काइल ग्रुप है और R डैश भी एक एल्काइल ग्रुप है। ऐसा हो सकता है कि दोनों सिमिलर हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिमिलर नहीं हो। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज पहले हम एल्कोहल्स और फिनॉल्स पे बात करेंगे कि एल्कोहल्स और फिनॉल्स क्या क्या है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं मैं, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एल्कोहल है। नाम क्या हो जाएगा, मिथनॉल, मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्या क्या हो गया, मिथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, मतलब अगर कोई एल्कोहल है, अगर आपके पास कोई एल्कोहल गिवन है, तो जब भी आप उसका नाम लिखेंगे तो ओल वर्ड जरूर आएगा, जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। ओल इज फॉर एल्कोहल फॉर ROH ग्रुप। ठीक है, चलिए थोड़ी सी नेमिंग को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। क्या हो जाता है, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, अब देखिए यहाँ O है, यहाँ E है, तो इस E को हटा देंगे क्योंकि दोनों वॉवेल एक साथ नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन टू ओल। अब इसी का एक और नाम क्या है, आइसो प्रोपेनॉल। ठीक है, अच्छा ये आइसो वर्ड क्यों आ गया, आइसोप्रोपेनॉल में आइसो वर्ड का क्या मतलब है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। ठीक है, अच्छा सेम से क्या मतलब है, सेम से मतलब यह है कि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है, ठीक है, उसके दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप सेम है। ठीक है, देखिए जिस कार्बन पर OH लगा है, मतलब जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैव सिमेट्रिकल एल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ। ठीक है, द कार्बन विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप हैव सिमेट्रिकल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द बोथ साइड। ठीक है, तो क्या हो गया कि दिस इज आइसोप्रोपेनॉल। ओके, next one is CH3 bond CH bond OH bond CH2 bond CH3. This is what? This is sec butyl alcohol. ठीक है, ये क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो गया, और सेक क्यों हो गया, जिस कार्बन पर OH लगा है उस पर 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। द कार्बन विच कंटेन्स द OH ग्रुप हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड विथ बोथ द साइड्स ऑफ दैट फंक्शनल कार्बन। क्या बोला मैंने, द कार्बन which contain the functional group have 2 different types of alkyl group, one is this
and one is this, have two different types of alkyl group attached at both the ends of the functional carbon atom. ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया गया, दिस इज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल. ओके, नाउ on the basis of number of OH group attached with, on the basis of number of OH group attached with carbon atom, with carbon. Alcohols are of three types. First is monohydric alcohol, monohydric, and second one is dihydric, and third one is trihydric. Monohydric, dihydric, and trihydric. Okay, now in case of monohydric alcohol, the configuration will be, the structure will be CH3, CH2, CH2, OH. This is propane 1 ol, propan 1 ol. Now in case of dihydric alcohol, CH3 bond CH2 bond CH2 OH, and this carbon also contain a OH. In case of trihydric alcohol, CH3 bond CH2 bond CH2 bond OH, this carbon contains an OH, and this carbon also contain a OH. This is a carbon chain having only one OH group. The carbon chain having two OH group, that is dihydric. The carbon chain having three OH group at three different positions at is trihydric. Okay, now there are some important common names, like this one is glycerol, glycerol. Okay, and if the structure of dihydric carbon is like this, CH bond CH bond OH bond OH, this is CH2 and this is CH2, then this is glycol. This is glycol. Both these compounds are very important, and these are organic compounds. I mean to say that these are naturally occurring compounds, generally found in plants and animals, both this glycerol and glycol, and these are very much applicable in industrial use. In industrial use, like in pharmaceutical company, in cosmetics, in medicines, or a special type of fuel, or as a cleansing agent. So these are very important compounds. तो आप ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल, इन दोनों का नाम हमेशा याद रखेंगे. Now the second basis of classification of alcohols is on the basis of number of alkyl group attached with the carbon, that is 1 degree, 2 degree and 3 degree. And you all know very well that 1 degree is primary, 2 degree is secondary, and 3 degree is tertiary. 1 degree is primary, 2 degree is secondary, and 3 degree is tertiary carbon. Okay, so in case of primary carbon, the carbon which contains the functional group have only one side engaged with alkyl group, or the other two sides are free, like CH3 CH2 OH. This is ethanol, as well as this is a primary carbon, or you can say this is a primary alcohol.
In case of secondary alcohol, that carbon which contain the OH group surrounded by alkyl groups from two sides, like CH3, CH, CH3, and the middle carbon have functional group alcohol. Now, in case of tertiary carbon, the carbon which contain the OH group surrounded by the alkyl groups from all the three sides. So this is what? This is 3-degree carbon. Okay. Now, as we all know that the 3-degree carbon is more stable. ठीक है, क्या है यहां पर, क्या है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या है, काफी ज्यादा है. तो इस चीज को याद रखेंगे. और ये बात मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन के लेक्चर में ही बता दी थी, SN1 वाले पार्ट 1 में, SN1 लेक्चर पार्ट 1 में, तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं. तो नाउ द थिंग इज दैट कि कार्बन कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड दिस इज टर्शरी अल्कोहल. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट if the ring is cyclic, if the ring is cyclic and we have a structure like this, then this is a primary alcohol, 1 degree. Now, if the structure is like this, then this is secondary alcohol, and if the structure is like this, then this is 3-degree alcohol. Okay. Now, next thing. CH3 bond O bond H. Okay. This is an alcohol. And this is example of phenol. This is the example of phenol. Now, what is the basic difference between alcohols and phenol on the basis of arrangement and attraction between carbon and oxygen atom? क्या बोला मैंने? What is the basic difference between alcohols and phenols on the basis of arrangement of carbon and oxygen atom? Then the answer is that in case of alcohols, in case of CH3OH, the hybridization of this carbon is sp3 because there are 4 sigma bonds attached directly with the functional carbon. And in case of phenol, the carbon which contain the functional group have only 3 sigma bonds, so the hybridization is sp2, and this hybridization results in the fact that the bond length between carbon and oxygen is greater in case of alcohol as compared to phenol. The bond length between oxygen and carbon atom in case of phenol is smaller than the bond length of oxygen and carbon in case of alcohol, and this is due to the hybridization of phenol, that is sp2, and hybridization of simple alcohol, that is sp3, and this hybridization is only for the functional carbon. अगर बाकी किसी का हाइब्रिडाइजेशन ऐसा आता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो फैक्ट यहां डिस्कस किया जा रहा है, दिस फैक्ट इज ओनली फॉर द फंक्शनल कार्बन, द कार्बन विच कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करता है. Next one is solubility. Next topic is about solubility. Since
alcohols have OH group and oxygen atom is capable in forming hydrogen bonding. Oxygen atom is capable for forming hydrogen bonding, so alcohols are soluble in water. Alcohols are soluble in water. Easily miscible liquid है water के साथ. Alcohols can easily mixed with water due to formation of hydrogen bond, and hydrogen bond occurs due to presence of oxygen atom in the functional group alcohol. Okay guys, यहाँ एक बात है कि आपको सारे चैप्टर्स में बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है. देन इनके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा जो बस बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, तो फिर वहां से हम सारी चीज़ों को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे. अभी जैसे हेलो एल्केन के केस में भी मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताया, यहाँ भी मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं बताऊंगा. बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दूंगा जो कि ओनली फॉर बॉइलिंग पॉइंट ही होगा. Now come to the preparation. Preparations. First is reduction of aldehydes and ketones. Reduction of aldehyde and ketones. Then first of all, what is reduction? Then the simple answer is addition of hydrogen is reduction. Addition of hydrogen is reduction. इस फैक्ट को दिमाग में रखेंगे. Now R bond C double bond O bond H. This is what? This is aldehyde. When react with H2, means when it gets reduced, then it will form R bond C bond OH bond H bond H, and this is what? This is alcohol. This is alcohol. Okay, note it down and then draw the mechanism. R bond C double bond O bond H plus H2. This is R bond C bond O radical bond C radical bond H plus H radical bond H radical. Then this H combines with the O and this H combines with the C. Then it will form C bond O bond H bond H bond H. Then this is what? This is alcohol. You can write an example also, that is CH3 bond C double bond O bond H. This is what? This is ethanol. Or you can say acetaldehyde. When react with H2, it will form CH3 bond C bond O dot bond C dot bond H plus H radical bond H radical. This H radicals combines with C and this H radicals combines with O, and it will form CH3 bond C bond OH bond H bond H. This is what? This is ethanol. This is what? This is ethanol. Okay, next example is for ketones. R bond C double bond O bond R. That is what? That is ketone. When react with H2,
then it will form R bond C bond OH bond H bond R, and this is what? This is 2-degree alcohol. This is 2-degree alcohol. For example, CH3 bond C double bond O bond CH3, and this is what? This is acetone. When react with H2, then free radical addition reaction takes place. Plus H dot plus H dot. This H dot combines with the O radical and this H dot combine with the C radical, and it will form CH3 bond COH bond CH3 bond H. This is what? This is 2-degree alcohol. ठीक है, प्रोपेन 2-ol. Now what happened if we reduce the carboxylic acid group R bond C double bond O bond OH? What happens if we reduce carboxylic acid group R bond C double bond O bond OH plus H2? Then it will form R bond C bond OH bond H bond OH. If we try to further reduce this diol, this dihydric alcohol through H2, then it will form R bond C bond OH bond H bond H, a monohydric alcohol. Let's see the example: CH3 bond C double bond O bond OH plus H2. Now this will form CH3 bond C bond O radical bond C radical bond OH plus H2, that is H radical and H radical. One of the H radical combines with O radical and another H radical combined with carbon radical. Then it will form R bond C bond OH bond OH bond H. Now this is a dihydric alcohol. This is also alcohol, but if we reduce this alcohol further by the action of H2, then we get R bond C bond OH bond H bond H plus water, and this is a monohydric alcohol. Monohydric alcohol. Sorry, this is not R, this is CH3. CH3. Okay, this is also a CH3. Okay guys, so this is all about today's lecture. In the next class, we will discuss preparation of alcohols by using Grignard reagent, by hydroboration reaction and through alkenes. Then we start the preparation of phenols. Okay guys, so वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए. ओके गाइज, थैंक्स.